In this series of these common error sentences, we have got as many as 7 ones, and we will have to find out where errors are. In sentences where errors are, there is bound to be some confusion before you as to where you could find out this thing, because in this confusion you land up citing some other part which is obviously not error, and that is why you have to make mistakes once again. So I think just before you try in that direction, you will have to understand the meaning in Hindi, because only on the basis of the Hindi meaning you could better understand where errors lie. So just before I try to detect that error in any of the sentences, in any section of the sentences, I would give you the Hindi meaning first, because only on that basis I will have some convenience in understanding and making you understand all these things. तो हम इस सेंटेंस की शुरुआत पहले करते हैं. I think we should arrange fire in the room for heat in winter. इन 3 सेक्शंस में कहीं एरर है. इस एरर को आपको डिटेक्ट करना है. इसका अर्थ हिंदी में होता है कि मुझे लगता है विंटर में हीट के लिए, गर्मी के लिए रूम में फायर का इस्तेमाल, आग का अरेंजमेंट, आग की व्यवस्था करनी चाहिए. तो यहां एरर कहां है? एरर इज जस्ट इन द सेक्शन बी. In the section B, we have got error, and even there, you will have to fix which of these words will have this error associated with. In fact, there is error, but with which word it gets associated with. तो यहां पर इन सभी शब्दों में किसके साथ एरर है? एरर फायर के साथ है, क्योंकि फायर यहां अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है, जो संभव नहीं है. वैसे अनकाउंटेबल नाउन के रूप में भी फायर का इस्तेमाल होता है. फायर का मतलब आग होता है, और जब आग का अर्थ वो होता है जो किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सके, किसी चीज का नाश कर सके, तो उस स्थिति में फायर को हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं, और वहां पे कोई आर्टिकल नहीं होना चाहिए. जस्ट एज फायर ब्रोक आउट, set fire to that building, set fire to that thing. So in these sentences you have not got any article just before it, because it is meant to destroy thing. It is used to destroy thing. But obviously in this sentence there is not any indication of fire being used for destruction. Rather it is used for warmth, it is used for heat. तो इस स्थिति में जहां फायर का प्रयोग एक ऐसे बर्निंग मटेरियल के तौर पे किया जाता है जो वहां पे आपको हीट दे, वार्म दे, एक तरह की जो है आराम दे, तो वहां पर फायर के पहले आर्टिकल ए आना चाहिए. आर्टिकल दी भी आ सकता है, बट नॉट हियर, क्योंकि वहां वो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, वो एक ऐसे मटेरियल के लिए है जिसको जलाकर हम कोई चीज करते हैं. जैसे हम अगर आग सुलगाते हैं किचन में, तो वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, कुकिंग के लिए है. अगर हम आग सुलगाते हैं अपने रूम में, वो भी डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, वो वार्मथ के लिए है. सो इन ऑल दिस केसेस wherever you have fire, meaning burning material used in order to give warmth, in order to help with cooking. So in all these cases where there is not any indication of destruction, you should use article A before fire, और इसलिए फायर का प्रयोग A के साथ किया जाएगा. तो फिर मैं कर दूं यहां पर आपको फायर के पहले A का प्रयोग करें, तो जाकर सेंटेंस सही होगा. तो यहां आपको रिटाइट करनी है, I think we should arrange a fire in the room for heat in winter. सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं. इन द डायरेक्शन ऑफ कल्चरल रिफॉर्म्स लिटिल थिंग हैज बीन डन येट इन द प्रेजेंट एज. हियर सेक्शन बी हैज गॉट एरर.
because cultural reform, after that little thing having been used is wrong, is incorrect, because little is a pronoun. It should stand alone with no word like thing just after it, because thing is of no congruity, thing is of no meaning here. लिटिल का प्रयोग जो है हम थिंग के साथ यहां नहीं करेंगे, केवल लिटिल होगा. लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, ये नेगेटिव सेंस देता है. लिटिल हैज बीन डन येट इन द प्रेजेंट एज का मतलब होता है कि कल्चरल रिफॉर्म की दिशा में, सांस्कृतिक सुधार की दिशा में लगभग कुछ भी अब तक नहीं हुआ है वर्तमान एज में, वर्तमान काल में. But let me tell you one thing. In fact, you could also have a question in your mind as to why it is not possible that one cannot use anything just after little. In fact, you could use something after little when little continues to be a determiner, because when a determiner comes, there should be some noun just after it. So little has been used in that way itself, but thing does not appear to be right here, does not appear to be correct here, because thing has not any congruity, thing has not any relevance here. वास्तव में हम little का प्रयोग किसी noun के पहले कर सकते हैं, जैसे I have little money, you have little sense. So अगर आपके पास यह सवाल है दिमाग में कि यहाँ पे thing क्यों नहीं आ सकता है, thing को हटाकर हम little को pronoun की तरह यूज क्यों कर रहे हैं, तो ऐसी बात है कि thing का मतलब होता है कोई unknown चीज. There is not anything specific that you could talk of. So when little itself does not indicate anything specific, why should one use one more unspecified thing like thing just after it? That is why both these things coming together will not make your expression right, make your expression meaningful. So better drop this word thing and you will have to use little as a pronoun with no word after that. इसलिए यहां पर हम think को हटा देंगे और ये think जो है यहां meaningless है, irrelevant है, और इसको हम यहां नहीं रखेंगे, केवल little से काम चलेगा. और आपको ये बात मैं बता दूं कि कभी भी little के बाद think आए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक जनरल परसेप्शन है बोर्ड के तरफ से कि कुछ ऐसी बातें दे जो कि एस्टैब्लिश्ड है, बहुत काफी स्थापित है, और स्थापित बात में ही यो थिंग का प्रयोग करता है. तो इस थिंग को आप तुरंत क्वेश्चन करना है अपने आप को कि वी डोंट हैव टू मेक यूज ऑफ दिस वर्ड. इन फैक्ट इफ देयर इज एनी वर्ड लाइक थिंग जस्ट आफ्टर लिटिल, वी विल हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ अगेंस्ट इट and think it is incorrect and that needs to be removed from a sentence, especially after little. तो आपको think का प्रयोग नहीं करके केवल little का प्रयोग करना है, क्योंकि little ही अपने आप में अकेला think का भी अर्थ देता है कि लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, लगभग कोई चीज नहीं होने के मतलब है चीज का अभिप्राय जो है little में ही कंटेंट है. थर्ड की बात करते हैं. It is my priority as a business to see not only service. It is my priority as a business to sell not only service but advice also. यह मेरी प्राथमिकता है एक बिजनेस के तौर पे, एक काम के तौर पे, कि हम न केवल सर्विस को सेल करें, केवल सेवा को बेचें, बल्कि एडवाइस को दें. यहां सेल जस्ट डज नॉट मीन सेलिंग समथिंग फॉर विच यू हैव टू मेक सम पेमेंट. सेल मीन्स insisting on somebody's taking note of that thing, paying attention to that thing, especially because it is advised as good, it is advocated as good. So sale का मतलब होता है कि उस बात को इंसिस्ट करना कि आप इसको सुने, इस चीज को समझें. It is for a person to advocate something, that is an act of selling. किसी बात का आप वकालत करते हैं तो आप उसको सेल करते हैं. तो यहां केवल सर्विस को सेल करना ही मेरा काम नहीं है उसकी प्रायोरिटी के रूप में, प्राथमिकता के रूप में, बल्कि एडवाइस को भी सेल करना मेरी प्रायोरिटी है. सो इवन हियर यू हैव दिस चैलेंज एज टू which part of this sentence has got erroneous trait. So let me
tell you without losing a couple of minutes that only in section B that error lies. So we have to remove something here. बिजनेस, ये बिजनेस शब्द जो है वो अनकाउंटेबल है. बिजनेस के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है. बिजनेस के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है सिवाय एक कॉन्टेक्स्ट के. इनफैक्ट ओनली इन वन कॉन्टेक्स्ट of various meanings of it, this word can be treated as a countable noun, wherein you could always use a article just before this. But later on that will be dealt with. Let me tell you for the present that business being uncountable, an uncountable noun will not have any article like a just before it. क्यों? इसका अर्थ क्या हुआ? जब बिजनेस का मतलब होता है वर्क, a piece of work that is part of our job. जब हमारे जॉब का कोई एक काम होता है, मेरे जॉब के अंतर्गत, मेरे काम के अंतर्गत कोई ऐसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको हम बिजनेस करते हैं. जैसे अगर हम कर सकते हैं कि इट इज नॉट माई बिजनेस, और इट इज बिजनेस दैट वी टीच यू, वी गिव यू सम आइडिया, सम इंस्ट्रक्शंस. सो इट इज जस्ट बिजनेस. It is not a business because that is the part of our job. That is the main part of whatever we do as a job. तो जब कभी भी जॉब के तौर पे, काम के तौर पे बिजनेस का प्रयोग किया जाए तो वहां पर बिजनेस अनकाउंटेबल है और उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है. जो एक संदर्भ में बताया कि वहां पे उसको काउंटेबल नाउन के रूप में रखते हैं, तो वो चीज है केवल धंधा, व्यवसाय. अगर व्यवसाय के तौर पे आप बिजनेस को लेते हैं तो वहां पर निश्चित रूप से ये काउंटेबल नाउन है. एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ यू वांट टू यूज it in a plural form like businesses, it is quite likely, like they have different businesses, they have a lot of businesses in the country and abroad, because that is a financial undertaking that they run. So obviously it may be numerous, it may be several. तो ये जो है उसी स्थिति में बिजनेस को हम काउंटेबल मानकर उसके पहले ए लगा सकते हैं, या फिर उसको काउंटेबल मानकर उसको प्लूरल भी बना सकते हैं, बिजनेस भी बना सकते हैं. लेकिन काम के तौर पे बिजनेस को लिया जाए तो वो अनकाउंटेबल है. एंड सो यू कांट यूज एनी आर्टिकल हियर. सो दिस ए शुड बी स्ट्रक आउट. यू डोंट हैव टू यूज ए हियर. नेक्स्ट 4. द ब्लैक सूट यू आर इन actually doesn't belong to a wedding. It is a generally held perception that belong always goes with preposition to. Belong generally comes along with preposition to, and that is why there may be a confusion as far as this particular sentence is concerned as to wherever there is any mistake. You might be thinking it is not that to cannot be used after belong, because you have always seen to after belong. But here this to is never possible. This to is never possible, and you will have to understand what that case is where to cannot be used after belong. अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि सेक्शन सी में गलती है, एरर है. बिलोंग के बाद टू नहीं आएगा, जबकि आपके पास एक सोच होती है हमेशा शुरू से ही, बचपन से ही, कि बिलोंग हमेशा टू लेता है, क्योंकि इट इज अ कॉमनली यूज्ड वर्ड, इट इज ए कॉमनली यूज्ड वर्ब. सो इवन ए चाइल्ड कैन डिटेक्ट वेयर सच अ मिस्टेक लाइज, एंड दे कुड ऑलवेज से that after belong must come to, but that is not going to be possible, especially in this context. यहां to का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि belong का मतलब होता है, जहां to नहीं आएगा, कि वो चीज जिसको आप बाद में रखे हैं, that is not a place, that is not a situation for something. इसका मतलब है कि काला सूट जो आप पहने हुए हैं वास्तव में वेडिंग के लिए सुटेबल नहीं है. When there is a context of suitability, you should use preposition in just after belong. जैसे अगर हम कहें कि this cine artist photo does not belong to
that room where you worship gods. That room where you worship gods, the cine actor, the cine artist photo should not be placed, should not be hung. It means that thing is not suitable for that place. Likewise, if you talk about a situation where something particular is not suitable, even there you could use preposition in just after belong. जैसे इस तरह की बातें क्लास में नहीं की जाती है. क्लास में इस तरह की बातें नहीं की जाती है क्योंकि क्लास जो है वो उस तरह के चीज के लिए सुटेबल प्लेस नहीं. तो हम कहेंगे कि सच मैटर्स डोंट बिलोंग इन ए क्लासरूम, नॉट बिलोंग टू ए क्लासरूम, क्योंकि वो जगह फिटिंग प्लेस नहीं है. सिचुएशन के लिए भी आप कह सकते हैं कि कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में वो चीज नहीं होना चाहिए. सपोजिंग समबॉडी हैपेंस टू बी इन ए क्रीमेशन ग्राउंड, जोकिंग डजंट बिलोंग देयर. जोकिंग doesn't belong in a cremation ground because the cremation ground is just where you will have to wear mourning. अब जो है शमशान घाट में या शमशान में कहीं भी कोई डेड बॉडीज रखे जाते हैं तो वहां पे शोकाकुल स्थिति होती है. तो वहां आप मजाक के तौर पर कुछ बात करते हैं तो वो आप कर सकते हैं कि ऐसी बातें क्रीमेशन ग्राउंड के लिए सुटेबल नहीं है. तो सच मैटर्स डोंट बिलोंग इन अ क्रीमेशन ग्राउंड. सो इवन हियर द सेम कॉन्टेक्स्ट अराइजेस. सो यू डोंट हैव टू यूज प्रीपोजिशन टू, रादर यू विल हैव टू यूज इन हियर. Fifth, she prides on her beauty which actually lies in beautiful acts rather than in beautiful features. वो अपने ब्यूटी पर घमंड करती है जो वास्तव में ब्यूटीफुल एक्ट्स में निहित होती है. ब्यूटी की बात करें तो वो ब्यूटीफुल काम में, सुंदर काम में निहित होती है, न कि सुंदर चेहरे में. काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं. तो यहां पर इसका अर्थ हुआ. बट दैट इज नॉट इनफ. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वेयर एंड हाउ इट कुड बी करेक्टेड. प्राइड जब वर्ब के तौर पे यूज होता है तो वो अपने तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है एज एन ऑब्जेक्ट. तो यहां पर हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे. शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी. सो योर सेंटेंस बिकम्स करेक्ट, फ्री फ्रॉम all incorrection, all erroneity. She has been suffering, sixth man, she has been suffering from headache for several years till date. वह आज कई साल से हेडेक से परेशान है. लेट मी टेल यू वन ब्रीफ थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड हेडेक. यहां सेक्शन बी में एरर है. बट हेडेक इज ए टाइप ऑफ डिजीज दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए काउंटेबल नाउन लाइक फीवर. जस्ट एज यू से ए फीवर, ए कोल्ड, likewise a headache should be used. She has been suffering from a headache. But यहां हम a का भी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि a headache का प्रयोग तब होगा जब आज अभी इस वक्त आपको हेडेक है. I have a headache, you have a headache. लेकिन आपका यह recurrent condition है. You often experience it. So here it should be treated as a countable noun indeed, but you will have to make it plural in form, and that's why you should have headache in the plural form. So it will be headaches because for several years, over several years, she has this bodily condition, she has this disease, and she has been suffering from it. So there will be different instances of her experiencing this mental condition, this bodily condition. So obviously it should be used in the plural form. It should be headaches. Seventh, don't worry, it is a little headache which will go away very soon. चिंता मत कीजिए, ये छोटा सा थोड़ा सा हेडेक है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा. फिर यहां हम जो है हेडेक के साथ एक बात आई है, ए लिटिल
जो कोलोकेट नहीं करता है, लिटिल कोलोकेट नहीं करता है, यहां पर आप ए स्लाइट का प्रयोग करेंगे या फिर ए बीट ऑफ ए हेडेक कहेंगे, ए स्लाइट हेडेक या ए बीट ऑफ ए हेडेक. So here I think you have got to understand everything. There is nothing else that I have to say anymore, and with that I bring it to an end. But again I would like to remind you that you will have to say something by the way of comment. If you have liked it, you will definitely subscribe this channel, and you will also share it. You will keep sharing it, and that is why I am always of this view that if this help, if this favorable attitude to it continues coming from you, I will be very happy, because there should be give and take, and I would like to remind you that it is the sense of give and take that you will have to maintain. Thank you very much. आपसे फिर मिलेंगे कल, फिर कुछ और दास्तान के साथ, कुछ और इंटरैक्शन के साथ, और निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे. धन्यवाद.